Hello everyone, in this video we will discuss disk scheduling algorithms. We have already covered the CPU scheduling algorithms in the process management part, but this is different scheduling algorithm. This is solely concerned with the disks only, or you can say the secondary storage, or how to access the secondary storage, or you can say how to access files or information from the secondary storage. The magnetic disks, or you can say the secondary storages, are the storages or the memory unit that provides bulk of the storage in the modern computer systems. This is how a magnetic disk look like. This is the structure of a magnetic disk, or you can say a hard disk, which consists of multiple cylindrical type disks like CDs, where each disk is of flat circular shape, and both the surfaces of this particular disk covered with magnetic material. And this is the head, which is placed just above this particular disk. This head is responsible for all the movements of read and write commands that are given by the operating system to fetch the information from this cylindrical magnetic head or magnetic disk. Generally, this disk or the drives rotate at a speed of 60 to 250 times per second, and the transfer rate is the rate at which the data flow between the drive and the computer. This transfer rate can be managed or improved by improving the access time, or you can say random access time, and this random access time is further divided into two types of times. One is seek time and other is rotational latency. Seek time is the time for the movement of disk arm to the cylindrical desired cylinder, like this. सपोज इस पर्टिकुलर सर्कुलर डिस्क के ऊपर किसी पर्टिकुलर सेक्टर के अंदर हमें कोई इंफॉर्मेशन फेच करनी है, तो इस सिलेंडर, इस पर्टिकुलर हेड को इस पर्टिकुलर सिलेंडर तक आने के लिए जो टाइम लगा, दैट इज नोन एज दिस सीक टाइम. एंड उस पर्टिकुलर सिलेंडर के अंदर कौन सा पर्टिकुलर सेक्टर है, उस पर्टिकुलर सेक्टर तक डिस्क के हेड को आने में जो टाइम लगा, दैट इज नोन एज रोटेशनल लेटेंसी. So both this seek time and rotational latency are very important, and they must be optimized using different algorithms so that the transfer rate can be maximized. For that we have different scheduling algorithms, or you can say disk scheduling algorithms, so that the seek time and rotational latency can be minimized and the efficiency of the head can be increased. The first in this series is the first come first serve algorithm. Whenever this particular head accesses some information from a particular cylinder, or you can say a sector, it gets ready to select another job, because बहुत सारी एक्सेस कॉल्स और यू कैन से सिस्टम कॉल जनरेट हो रही हैं सिस्टम में बार बार, टू एक्सेस द इंफॉर्मेशन रिसाइड्स इन डिफरेंट सेक्टर्स एट डिफरेंट लोकेशंस. और इस हेड को सिलेक्ट करना है. जितनी क्यू में बार बार रिक्वेस्ट आती जा रही है, इस पर्टिकुलर रिक्वेस्ट को फुलफिल करने के बाद कौन सी रिक्वेस्ट को फुलफिल करे, सो दैट एफिशिएंटली हेड की मूवमेंट को मेंटेन करा जा सके. फॉर दैट पर्पस डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम इज यूज्ड. लेट्स सी वन एग्जांपल so that this concept can be understand. Suppose in this example current movement of head, और head की जो current है situation, that is on the 53rd cylinder. ये यहाँ movement है currently head की, और queue में request अलग अलग cylinders के लिए generate हो रही है by the different processes, either to fetch the information or to store that information. Current movement is at 53. Algorithm we apply here is for first disk scheduling algorithm is simplest one, that is first come first serve. जो भी पहले रिक्वेस्ट आई उसे फुलफिल करेगा हेड मूवमेंट. सपोज 53 पे था करंट पोजीशन, नेक्स्ट क्यू पे रिक्वेस्ट आई 98 सिलेंडर को एक्सेस करने की. द हेड मूवमेंट गोज टू द 98, और जो भी इंफॉर्मेशन को फेच करना है या उसको स्टोर करना है, दैट इज डन. आफ्टर दैट next in the queue is 183, that is accessed. Then is 37, then is 122, then is 14, then is 124, then is 65, then is 67.
no more further request, head movement stop at this particular 67th cylinder. Total cylinder head movement is around 640 cylinders in this when we apply FCFS in this particular example. Just now look at the drastic movement between 183 to 37 and also 122 to 14. अगर ये 37 और 14th रिक्वेस्ट अगर एक साथ फुलफिल कर देते और उसके बाद 122 और 183 को करते तो ये जो हेड की मूवमेंट है वो इतनी ड्रास्टिक मूवमेंट चेंज नहीं करनी पड़ती उसे. फॉर दैट पर्पज अनदर एल्गोरिथम कम्स, दैट इज SSTF, that is shortest seek time first scheduling algorithm, that is like this. This is the same example. Current head movement is 53. In this particular shortest seek time first algorithm, which is totally based on the shortest job first scheduling, which we have covered into the process management unit, this algorithm selects the request with the minimum seek time from the current head position. जिसका भी हेड मूवमेंट के पास जो भी क्यू में रिक्वेस्ट होगी पर्टिकुलर सिलेंडर की, दैट विल बी फुलफिल्ड. लाइक 53 के पास सबसे क्लोजेस्ट है 65, it will be fulfilled and fetched. Then is 67, then the closest one is 37, then 14, then 98, then 122, then 124, then 183, like this. Here the total head movements are only 236, which is around 1-3 times to the FCFS, where the cylindrical total movement was 640. So this particular algorithms gives a substantial improvement in the performance. Although a major problem is associated with the SSTF, that is अगर current head movement के पास सपोज 53 के अराउंड ही नई प्रोसेसेस और नई रिक्वेस्ट क्रिएट होती जा रही हैं सिस्टम में क्यू के अंदर. सपोज 65 पे गया, फिर 67 पे गया, सपोज 70 रिक्वेस्ट आ गई, फिर 72 सिलेंडर के लिए रिक्वेस्ट आ गई, देन 65 के लिए अगेन आ गई, तो वो हेड की मूवमेंट उसी पर्टिकुलर सेक्टर्स और सिलेंडर्स के अराउंड ही मूव करती रहेगी. जो अवे मूवमेंट्स हैं इस पर्टिकुलर हेड से, लाइक 183 और 199 और 124, उनके लिए दैट्स रिक्वेस्ट फॉर दोज सिलेंडर्स मस्ट वेट फॉर अराउंड इनफाइनाइट टाइम in this particular situation. So this SSTF is not optimal solution. For that we go for a next scheduling algorithm or next disk scheduling algorithm, that is SCAN. SCAN algorithm is also known as a elevator algorithm, because in SCAN algorithm the disk arm starts from one end of the disk and moves to the other end of the disk and then reverse back to the other end, like this. The current head starts at 53. Same example we are taking here. The current disk head movement goes from current position to the one end, and from that end it goes searching to the other end of the disks cylinders. Like 53 के बाद it moves to 37. जो इस डायरेक्शन में जितनी भी सिलेंड्रिकल मूवमेंट है it will traverse like 14, then till the end it will go till 0, then again it moves back. In that movement it firstly reaches to 65, then 67, then 98, then 122, then 124, then 183, then the end point, that is 199. Again one major problem is associated with SCAN, that अगर ये head movement इस डायरेक्शन में है and then it has to move like this. अगर यहाँ कोई रिक्वेस्ट आ जाती है सपोज 15 की, इट विल बी इमीडिएटली फुलफिल्ड. रेदर हमने जो पहले से रिक्वेस्ट सबसे पहले क्यू में 183 और अदर रिक्वेस्ट हैं, दे मस्ट हैव टू वेट बिकॉज न्यू रिक्वेस्ट हैज जस्ट अराइव्ड जो हेड मूवमेंट के अराउंड बिल्कुल सबसे पास थी. टू रिमूव दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम अनदर डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम कम, दैट इज C-SCAN, like this, or you can say circular scan. छोटी सी वेरिएशन है C-SCAN में, दैट
जब एक हेड मूवमेंट एक डायरेक्शन में कंटिन्यू करेगी रिक्वेस्ट को फुलफिल करना ऑफ द सिलेंडर्स लाइक दिस, 53 से सपोज इस डायरेक्शन में फुलफिल करना स्टार्ट किया हेड मूवमेंट ने, डिस्क हेड मूवमेंट ने, दैट गोज टू 65, देन 67, देन 98, 122, 124, 183 एंड टिल द अदर एंड वन एंड दी दैट इज 199. जब रिवर्स डायरेक्शन में जाएगा it do not fulfill any cylinder request in between that, and it reaches to the other end till 0, and from 0 it again start fulfilling the request till the other end, and again at this end it goes to the again 0 without fulfilling any request in between. Another version of scan is a look, or another version of C scan is C look. That in look and C look the head movement does not go to till the final end of the disk, it just reverse back from the last request it fulfilled. Like in this example 183 is the last cylindrical request it has to fulfill, it do not recover the 199th cylinder, it just traverse backly to the other end request that is 14, and it will not go till 0 in C loop. If it is look, it will go to the other end request by fulfilling the in between requests, but it will not go till the other end like 0 and 199 in the look and C look. I hope you understand the concept of disk scheduling algorithms. Thanks for watching. Please subscribe the channel.